friends, welcome to Study Academy. Today we will discuss about C variables. So, what is variables? A variable is nothing but a name given to a storage area that our programs can manipulate. A variable is nothing but a name given to a storage area that our programs can manipulate. That is our memory, and these blocks are RAM. Okay. So, if you take a number as a variable or a character as a variable, so this number or character will be stored here. Suppose this will be stored here. Okay. So we should to give this block a name. Okay. So this name is called as a variable. Okay. Suppose अगर मान लो कि यहाँ पर एक कुर्सी है, ओके, यहाँ पर एक कुर्सी है और यहाँ पर तुम खड़े हो, तुम्हारा नाम है राम, ओके। सो अगर इस कुर्सी पे तुम बैठ जाओगे तो लोग क्या बोलेगा? लोग बोलेगा कि उस कुर्सी पे राम बैठा हुआ है, यही बोलेगा। कोई तो नहीं बोलेगा, जो तुमको नहीं जानते वो तो बोलेगा कि जो वो कुर्सी पे जो है उसको मैं नहीं जानता, और उस कुर्सी पे कोई आदमी बैठा हुआ है। लेकिन जो तुमको जानते हैं वो क्या बोलेगा कि उस कुर्सी पे राम बैठा हुआ है, ओके। सो इसी तरह से अगर कोई जो नंबर और कैरेक्टर और जो वेरिएबल इनपुट होता है वो अगर मेमोरी में जिस ब्लॉक में स्टोर होता है उसको हम एक नाम देते हैं, उस नाम को क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल, ओके। होप यू अंडरस्टैंड। सो each variable in C has a specific type which determines the size and layouts of the variable's memory. कॉमन सी बात है, ये सब वेरिएबल एक है और एक वेरिएबल एक है, किसी के साथ किसी का कोई लिंकेज भी नहीं है, ओके। तो द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड विद इन दैट मेमोरी एंड द सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी अप्लाइड टू द वेरिएबल, ओके। द नेम ऑफ ए वेरिएबल कैन बी कंपोज्ड ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड द अंडरस्कोर कैरेक्टर। वेरिएबल्स नेम अंडरस्कोर, कैरेक्टर, डिजिट्स, लेटर्स किसी तरह का भी हो सकते हैं, लेकिन it must begin with either a letter or an underscore. It must begin with either a letter or an underscore. Upper and lowercase letters are distinct because C is case sensitive. We all know that C is a case sensitive language, so uppercase letters and lowercase letters different in this language is not same. Based on the basic types explained in previous chapter, there will be the following basic variable types. There are common variable is character variable, int variable, float variable, double, void. What is character variable? Character variable is typically a single octet. Character variable's value is 1 byte. Okay, this is an integer type. Int variable, the most natural size of integer for the machine. It is very common variable. Int variable is very common variable. Float variable is single precision floating point value. अगर मान लो कि कोई नंबर है 3.25, तो उसको अगर तुम मेमोरी में स्टोर करना चाहते हो तो तुमको जो वेरिएबल लेना पड़ेगा वो फ्लोट वेरिएबल होना चाहिए, ओके। डबल वेरिएबल, डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, और void means no return, represent the absence of type, okay. Variable definition in C. A variable definition means to tell the compiler where and how much to create the storage for the variable. A variable definition means to tell the compiler where, focus on this word, where, and how much, focus also on this word, to create the storage for the variable, okay. A variable definition specifies a data type and contains a list of one or more variables of that type as follows, okay. First type, then variable list. This is identifier. Here type must be a valid C data type including character, W character, int, float, double. We already discussed about it. And any user defined object listing. And variable list may consist of one or more identifier names separated by commas. अगर तुम मान लो कि इस I को इस J से अगर तुम सेपरेट करना चाहते हो तो तुमको क्या लगाना पड़ेगा? एक कॉमा लगाना पड़ेगा। और ये जो I J K है ये एक इंटीजर है और int वेरिएबल है तो int में स्टोर होगा, और जो C C H है कैरेक्टर में स्टोर होगा,
एक सैलरी अगर मान लो एक नंबर में है और वो जो नंबर प्रिसिशन हो सकते हैं, तो इसके लिए फ्लोट वेरिएबल डबल डी। द लाइन int I j k both declares and defines the variables. int I j and k both declares and defines the variables I j and k. Okay, this I j and k will be stored in memory, and these blocks will be named int. Okay, which instructs the compiler to create variables named I j k of type int. Okay, variables can be initialized in their declaration. The initializer consists of an equal sign followed by a constant expression as follows. Type, variable type, variable identifier, name. You can give any types of name, and value. If you want to give any value, okay, suppose here we discussed about I, j and k. If you want to give a value of I, so you can input I is equal to 1, j is equal to 1, k is equal to 2, 3, 4 as you want. So this is called as initializing of d and f. Okay, so extern int, here is some examples. And for definition without an initializer, variables and static storage, duration be initialized with null. Okay, the initial value of all other variables is identified. Variable declaration in C. A variable declaration provides assurance to the compiler that there is one variable existing with the given type and name, so that compiler proceeds for further compilation without needing complete detail about the variable. I repeat, a variable declaration provides assurance to the compiler that there is one variable existing with the given type and name, so that compiler proceeds to further compilation without needing complete detail about the variable. A variable declaration has its meaning at the time of compilation only. A variable declaration has its meaning at the time of compilation only. Compiler needs actual variable declaration at the time of linking of the program. A variable declaration is useful when you are using multiple files and you define your variable in one of the files, which will be available at the time of linking of the program. वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजफुल है अगर मल्टीपल फाइल्स यूज हो रहा है तो you will use extern keywords to declare a variable at any place. You can use extern keyword to declare a variable at any place. Though you can declare a variable multiple times in your C program, but you can define only once in a file, a function or a block of code. Okay, hope you understand. Example. This is example. Okay. Pause and see this example. If you don't understand this percentage d, ठीक है, ओके, जो ये जो परसेंट ए अगर समझ नहीं पाते, नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इट. व्हाट इज परसेंटेज डी, व्हाट इज परसेंटेज एफ एंड व्हाट इज प्रिंट एफ, वी विल डिस्कस अबाउट इट. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. व्हेन द above code is compiled and executed, it produces the following result 30. And I already discussed about it that if you give a precision number, so you should to use a float variable, and here float variable used, so this is the output. Some concept applies on function declaration, where you provide a function name at the time of its declaration and its actual definition can be given anywhere else. For example, pause and see this example. And L values and R values in C program. So now see, there are two kinds of expression in C program. There are two kinds of expression in C program, L value and R value. Okay, expression that refers to a memory location is called L value. Expression that refers, कोई expression अगर कोई memory location को refer कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, L value expression. And L value may appear as either the left hand or right hand of the assignment. L value left hand और right hand तरफ से हो सकते हैं, assignment कर सकते हैं. और right R value, the term R value refers to the data value that is stored at some address in memory, and R value is an expression that cannot have a value assigned to it, which means an R value may appear on the right but left hand side of the assignment. Okay, left value जो L value होता है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरह से हो सकते हैं, लेकिन अगर R value हो तो वो सिर्फ और सिर्फ राइट साइड से होगा, लेफ्ट साइड से नहीं होगा. ओके, हियर इज ए एग्जांपल. int g is equal to 20. Okay, it's a valid program, but following is not a valid statement and would generate compile time error.
It's a valid statement and it's not a valid statement because here is no integer. Understand? Here is no integer. If you want to put this value on your memory, so you have to take a integer. Okay? There is. So here are some reserved keywords. There are 32 reserved keywords. Keywords का नाम यहाँ पर वो आप यहाँ पर अगर प्रोग्रामिंग करते वक्त यहाँ पर आइडेंटिफायर से साथ ही यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कीवर्ड है वो सब रिजर्व कीवर्ड है। अगर आप मान लो कि आपके फैमिली में किसका नाम विधान है, क्या घर में किसका नाम है विधान, तो कोई और दूसरे और कोई मेंबर का नाम तो विधान नहीं हो सकता। ओके, वो तो रिजर्व है, वो जो विधान है तो रिजर्व है, किसी और का नाम तो विधान नहीं हो सकता, किसी और का नाम तो दूसरा कुछ रखना पड़ेगा। तो इसलिए वो जो आइडेंटिफायर है सी का वो रिजर्व कीवर्ड है, वो आप चाहते हैं नहीं कर सकते। होप यू लाइक दिस session. Okay, so if you have any queries you can put a comment on comment section. Don't forget to subscribe our channel. Thank you. Bye bye.